Assalamu alaikum ji. Welcome back to another episode of Kahe, Kazi. My guest today was Risham, Faiz, Bhutta. We get to speaking about her new song, Pairi. We also speak about the spirit of solidarity and outrage and indignation that is enamored in the woman art, that the Aurat March is enamored by. And we speak about artistic expression. Enjoy. Three, two, one. Risham, Faiz, Bhutta. Risham, Faiz, Bhutta. Risham, Faiz, Bhutta. आपने बूथा बोला. Bhutta. What is that, Punjabi? That is Punjabi. Yeah, I like that word. Yeah. What does I that like mean? it. Bhutta कहते हैं चेहरे को. चेहरे को. लेकिन उसको मुखड़ा भी कहते हैं पंजाबी में. मुखड़ा थोड़ा सा खूबसूरत वर्ड है. हाँ, और बूथा कि थोड़ा. अगर आप किसी की तारीफ करना चाहें तो आप बड़ा सोना मुखड़ा है. तो बड़ा सोना लेकिन अगर बूथा आप है. बेइज्जती करना है बूथा. You can't say बड़ा सोना बूथा है. Nah. Okay, fantastic. I don't think so. Maybe No. I'm just like, maybe it's in my head. But you're a rapper, poetic license. आप तो कर सकते हो शायद. मैं कर सकती हूँ. आप कर सकते हो. बहुत ही खूबसूरत बूथा पाया. जी, आप thank you. हाँ जी. Risham, you're in Karachi. You just released a song. Yes. Let's talk about that. Start there, and then we'll see where we go. बिल्कुल. How was it coming up? So, how do you usually come up with your music? The process? Yeah. I get a melody first. Okay. In my head. Okay. And it comes at the weirdest times. Sure. Like I'm pooping. I'm taking a shower. You need to poop, yeah. I'm talking to someone and I'm like, oh, hold it. Wait. And I just open up my phone and I'm recorded. And then the other person is just like, अच्छा ठीक है चले. and then I'm like, continue. हाँ, please, yes. So उस तरह करके random times से गाड़ी चलाते हुए एकदम से साइड पे गाड़ी लगा ली. Yeah. एक मिनट क्या गाड़ी साइड पे लगा दी? गाड़ी साइड पे लगा ली धुन आ गई दिमाग Okay, में. okay. Priorities in life. Of course. And then I forget about the dhun for 3-4 days because you need time to let it settle in your head. Okay. Then I come back to it and then I write lyrics on it. Mm-hmm. And the lyrics that I write are not, they're not for a certain purpose. Okay. They're not on a certain theme or topic. I don't have that in mind. Okay. All my lyrics of all my songs are based on my true incidents and life story. Every single one. Every single Without one. fail. So Okay. any one of my songs that you listen to, you can know my life better. Okay. So it's like I use my writing, my poetry as an expression to just take it all out. Okay. Okay. Fair. So Fair. this song, Pairi Kuri, was also like was very much an expression for me. Okay. Where I just, expressed everything that I had clogged up in my head and these feelings and emotions and ये सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में फंसी हुई थी, I just took it out. Was there a primary emotion? The primary emotion was, there were so many. But like one of them, the main one was that, I felt like people guided me too much. On and off. Okay. कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो. यार तुम तो बहुत अच्छा एक्ट करती हो. Acting कर लो. एक्टिंग कर लो. तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो. तुम्हारे गानों में ना पता है ये होना चाहिए. अगर थोड़ा वजन कम कर लेती ना. ये वाला अच्छा होता है. अगर तुम्हारे गानों में ना थोड़ा सा ऐसे ये वाला टच आ जाए. पता है तुम एक सर्टेन अवाम को केटर कर रही हो. दूसरी अवाम पे जाओ. तुम ये कर रही हो. तुम. So I was like, stop. Just stop. So this is only related to music. Yeah. Like otherwise in life as well. Yeah, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो. Like suggestions. Unsolicited advice. Yeah. नहीं चाहिए ना. नहीं चाहिए. I think from what I've experienced of Pakistan, since I've come back, there is a lot of liberty. People take a lot of liberty with you, with your time, with your space. इसको ऐसे कर लो. Sometimes people just aren't in the mood for it, Exactly. इसको अगर if you look like this, if you were like that, maybe you should be more like someone else. Yeah, I'm not na. Exactly. I'm like not. very छोटी सी example है, like a friend of mine. Yeah. He's also a very well-known singer now. उसका गाना आया. So we were like 5-6 people sitting and I was like, good yaar, good effort, great video, nice. And everyone, oh यार, पता है अगर वैसे ये ऐसे कर लेता ना, इस part पे मज़ा नहीं आया. So all I heard was pessimistic approach. Yeah. Like एक बंदे ने भी ये नहीं कहा यार, good effort. Was the person in the room who was? No. Okay. He wasn't. Okay. We just, put up the video on Did the TV. music video do well? The music video is great. Yeah. The song was good. Yeah. ठीक है, आपकी, it's not your cup of tea. You're not that genre person. Then you can just be like, yeah, this is not my genre. लेकिन ना, एक आदत बन चुकी है लोगों की to criticize to a point. I mean, criticism is healthy,
It's Yeah, good. it's not. I would But argue. this is not criticism. It's not. It's just dismissing कि मतलब ये जो मैं करता हूँ वो सही है और आप जो करते हो गलत है. Ones and Exactly. zeros. That's not You don't believe in perspectives, ना? Yeah. You're not, आपके अंदर है ही नहीं कि आप कैसे को यार तुम अपनी जगह पे ठीक हो. Yeah. इतनी सी तो बात है. नहीं. All right. So the primary emotion was, let's say, frustration or Frustration. indignation. कि यार ये मतलब बिल्कुल. आप कौन होते हो बोलने वाले? कह सकते हैं. And then the lyrics came out of that. Yes. How do you go forward? So then when the lyrics came out, the entire idea of this song, why we released the song, why we made this song, why this entire team came up in this was to make a women empowerment anthem, to support women to voice for their opinions, to talk about all the rights that they don't get in any country or Sure. in anywhere Sure. or in any situation. सही है. And जब मैंने वो frustration को इसके साथ clash किया, like when I boomed these two together. Yeah. So then the lyrics came out, and the lyrics are, so imagine you're a girl. I'm a girl. आपने एक टास्क कंप्लीट करना है घर से निकल के. ठीक है इंशाल्लाह. कि आपको पता है कि मैंने वहाँ जाना है, मैंने काम करना है, मैंने Yeah. इससे मिलना है, मैंने Yeah. ये करना है, मैंने परफॉर्म करना है, प्ला 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 जो भी Yeah. करना है, Yeah. मैंने कपड़े खरीदने जाना है, मैंने अंडे लेने जाना है, कॉलेज जाना मैंने है. बच्चों को पिक करने जाना है, मैंने कॉलेज जाना है, मैंने स्कूल जाना है, मैंने ठीक. कुछ भी करने ठीक. घर से निकलना है. तो सही. सबसे पहले तो आप घर पे बैठ के जब आप उठते हैं ना, तो सबसे पहले आप वो एनवायरनमेंट बेयर करते हैं. सही. अच्छा अम्मी क्या कहेंगी, अबू क्या कहेंगे, मैंने क्या पहन के जाना है, मैंने क्या खाना है, मैं कैसी लगूंगी, मेरे बाल ज़्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे, ये तो नहीं लग रहा, मैं ज़्यादा फ्लैशी तो नहीं लग रही. Sorry, वो तारा को तंग कर रही थी. हाँ. ज़्यादा बाल ज़्यादा अच्छे नहीं लग बाल रहे. ज़्यादा अच्छे तो नहीं लग रही ना, टू मच. अच्छा ओके. सही है. So that is the entire drama that you go through before leaving home. अच्छा अब आप घर से निकल रहे हैं. अब मैंने करीम पे जाना है तो मैंने कैसे कपड़े पहनने हैं, मैंने अपनी गाड़ी में जाना है तो मैंने कैसे कपड़े पहनने हैं, सही. मैं रास्ते में कहीं रुकती हूँ तो मैंने किस तरह चलना है, मैं किसी से बात करती हूँ तो मैंने किस तरह बात करनी है, मैंने गाड़ी वाले ड्राइवर से किस तरह बात करनी है. अब मैं जहाँ पहुँच गई हूँ वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है, वो मुझे कैसे जज करेंगे, मैंने कैसे एक्ट करना है. सो एक पूरी ना रोज़ सुबह उठने से ना रात तक at the back of your mind you have all this going on. That's always going on. It's in your subconscious. And this is more for women. It might be for men as well, Not as much. but not to that extent. No, it's not. No. So just imagine living a life where there's so much at the back of your head. Sure. So hence the lyrics के लोची कल दी गले हाँ. कार तो निकल के हाँ. जिथे भी मैं जावां लोकी बकदे ने गल्ला कहंदे कुरी डाडी कि मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, जी I was gonna yeah. आप अगर ब्लंट हैं, Yeah. आप अगर किसी के लड़के के साथ पकड़े गए हैं, आपकी किसी के साथ दोस्ती है, आप कोई गलत काम कर रही हैं. हाँ गलत काम कर रही है. गलत काम क्या होता है? गलत काम पढ़ाई. पढ़ाई. आप बहुत ओवर हैं, आप बहुत ही एक्टिव हैं भैया, आप बहुत लोगों में फिरती आप हैं, काम करती हैं, आप पैसे काम- कमाती हैं, आप अपना घर खुद चलाती हैं. खुद चलाती हैं. तो कहते कुरी डाडी, तो फिर उसका हल क्या होता है, लोगों के पास शादी कर दो. हम्म. ओ जी लड़की हाथों से निकल गई, इसकी शादी करो, ये खुद ही बंदा इसको संभाल लेगा. बंदा क्या कैसे संभालेगा? कैसे संभालेगा? अल्लाह रहम करे. सही है. सो कहते कुरी डाडी करो एदी शादी, देर किती ते कुरी हथों निकलती. सही. हाथ से निकल जाती हैं. सही बात है. बोला सही रही. yeah, and then we come to a point where I'm like, जब वो इस सारी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही होती है, what she goes through. So what she goes through is कि अपना सांस आप रोक लेते हो, बातें आप किसी से कर नहीं पाते, तो सांप हट जाती, पूरी गल्लां दी चोर. But she's also beautiful and she's bold Of course. and she's a woman. Of course. So दिल लुट जाती कुम कुम के है by God. Then we come to the chorus. लो मेंटालिटी ठोड ते रख दी, सही है. सही है. हाँ प्लीज. मैं और सब जे तू है समझदी, हाँ. मैं नचदी हत्थां तो निकलदी, पैरी कुरी तू है समझदी. सो आपके घर में आंटियां, अब्बू, भाई, बहन, जितने भी लोग मेरे इस बारे में जो भी बकवास करते हैं ना, वो मैं हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. वो सर मैं हूँ, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट टू बी दिस वुमन. एंड लाइफ मेड अस लाइक दिस, एक्सपीरियंसेस मेड अस लाइक दिस. मर्जी से नहीं एक दिन उठे और मैंने कहा मैं बोल दूंगी, हाँ. Yeah. मैं सबको बोलूंगी जो मेरा दिल करता है. Yeah. ये पागल नहीं होती. You know it's a fight. It's a fight. No one wants to You fight all go the through time. experiences and then you become this woman. Yep. So आप जब तक आप ये सब कुछ सोच रहे हैं, मेरी सक्सेस है इसमें, क्योंकि इसका मतलब मैं ये सब हूँ बहुत आला. हाँ ठीक है. So ठीक है. Fair that's enough. the entire concept. That's the concept. Okay, so a couple of things that we need to unpack. First off, that
first part stood out to me as well. मैं पंजाबी समझ लेता हूँ, ले मैं पंजाबी समझ लेता हूँ लेकिन जैसे ये जो वर्ड होता है ना डाडी, ये सिंधी में भी होता है, ये उर्दू में भी इनफैक्ट इस्तेमाल किया जाता है, डाडी सिंधी में भी. हाँ. तो and it has interesting, what's interesting, it has similar connotations, not exactly the same but similar, कि आप एक तरीके से ढीठ या मजबूत या gritty या tough, ये सारी या blunt, ये सारी family है. This is the family of the meanings, the synonyms. Yes. Tell me, have you always been like this? Actually no. When I was a kid, Okay. I was a very spoiled softy Okay. sort of a girl. सही है. Bड़ी spoiled, like daddy's little girl. Yeah. Always pampered, youngest of the house. And जो मांगा दे दिया, जो खाना मिल गया, that pampered kid. And always like my mom used to be so worried when I used to like go anywhere because she was like, oh, she's so nice, she'll do whatever people say and then she'll be ये तो मतलब इस तरह की है. अच्छा, ये तो नहीं होना चाहिए. हाँ, ये मतलब my parents are very supportive. They're very like liberal sort of people. Okay. So उनको बस ये फिक्र होती थी कि बहुत she's too nice. Is that sad? That being too nice is a disadvantage? It's not, but she knew that the people we have are horrible. Yeah. Are horrible and they're going to ये इसकी ये niceness को तोड़ देंगे. तो वही हुआ. अरे एक मिनट, मुझे लग रहा था अभी कहानी शुरू होगी. वही हुआ. आहिस्ता when I started facing the world, वो जो मेरे अंदर का एक नाइस इंसान था, that was always taken for granted, that was always snubbed, that was always ran over. I got bullied as a kid a lot because I had a boycott. For having a boycott. एक बात सुनो, I don't mean to. ये तो लड़का है, इसके साथ नहीं खेलना. ये तो मतलब ऋषम इज अ बॉय, ऋषम इज अ बॉय, लंच चोरी कर जाते थे, मुंह पे बॉल मार देते थे, stuff like that. अच्छा, मैं बात सुनो. I do have to say this, and I don't mean to make this about cities. Lahore is really bad when it comes to harassment and stuff. Yes. है ना? Bullying and harassment and stuff. Yes. तो मैं हालांकि कराची पे बोल रहा था ये, लेकिन ये लाहौर में बहुत ज़्यादा होता है. Where you're taking liberty, like people take liberty with you, especially if you're a woman. But I wouldn't like categorize it as Punjabis or Lahoris or what, but like people there, it's more common in that city कि ज़रा सा आपको नज़र आया ना कि अगले की आपको एक vulnerable side या soft side, आपने दस्ती ऊपर ऐसे करके. अच्छा, ये बड़ा वाला ऐसे हील वाला. पाँव रख लिया आपने. ये नॉर्मल भी नहीं है, ये थोड़ा हील वाला. आपने कहा कि अब तुम मेरे पाँव के नीचे. और वो जो लाइक एक वो पावर का कॉन्सेप्ट है ना ऑन द अदर पर्सन, लाइक वी आर दीस सॉर्ट ऑफ पीपल. हम तो अप्रिशिएट करते हैं अगर कोई पावरफुल हो रहा है, हम कहते हैं यार वेरी नाइस, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. माशाल्लाह. लेकिन मोस्टली पीपल देयर आर लाइक, ओ तेरे में पावर है, तेरे तो बड़ी पावर है, करके दिखा फिर मैं भी कुछ हूँ. हाँ, मेरे में बड़ी पावर है. सही. ओके, सो you grew up in Lahore. Well, I'm trying ना, पंजाबी क्या हो गया, I'm trying, मैं सीख लूँगा क्या. So growing up in Lahore, how did you get into rap as a woman also? Okay. Yeah. So in 2006, like I started writing songs in 3rd grade. Songs, poems? Yeah. Actual songs? Okay. That's I got my voice inherited from my mother. Okay. And her side. And we have this khandan where अगर हमारे खानदान में कोई बसोरा पैदा हो जाता है तो मतलब उसको गवा के ना सही कर देते हैं. आप गलत हो, ट्यून कर देते हैं. बेटे आप गलत पैदा हो, आपको हमने सही करना है. उस बेचारे की कोई चॉइस नहीं है. वो नहीं. That's awesome, dude. That's good. We have like these crazy functions where everyone sings and dances and everything. Like it's because it's a Rathod khandan and that blood. Maybe. That blood, but also it's cathartic. Yeah. It's healthy for you. So we're all like full of artists. Yeah. And when I was a kid, I remember I was in 1st grade when I sang the first song of my life, and that was Mujhse Pehli Si Mohabbat. Oh. And then my first performance was in 4th grade where there were like there was a choir of 20 children of all ages, and I was the youngest kid sitting in the front with the tabla and a harmonium, and I performed a rag. Oh, that's wonderful. Yeah. Rags are difficult. Yeah, in front of like a lot of like 1,000 people. Wow. Yeah. That's awesome. Okay, wait. So you're telling me you're classically trained? मतलब एक तरीके से. मतलब semi-classical. Yeah, मतलब I never really got along with any ustads, but yeah, you can say that. उस्ताद भी नहीं. You can say that. बेटा वो मोटी आवाज में गाती है, हंस खत्म करो. क्या खत्म करो? हंस क्यों खत्म करना है? नाक में नहीं गाना है, प्यार जैसा, हाथ नहीं हिलाने. हाथ नहीं लाने में क्या करूं? हाथ नहीं लाने, प्यार से
तो मैं करती थी अस्सलाम वालेकुम, Alaikum assalam. very nice meeting you. Sahi Khuda hai. Hafiz. Okay, dude, that's whatever, right? But I mean, So okay. coming to the rap part, Yeah, how I yeah. started writing. Yeah, So yeah, then I was like, I kept singing my entire life. Idhar performances school mein kar li, blah blah blah. What's your favorite song to sing? My favorite song to sing. Classical. ये अंग्रेजी बात कर रहे हैं, उर्दू बात कर रहे हैं. आप जो सा आज जाने की जिद ना करो. अरे या दैट्स अ गुड वन. मैं थोड़ा बर्गर हूँ, लेकिन मैं ये वाला मैंने भी सुना हुआ है, and I get quite upset. Very powerful. Thank Very you. very heavy. But in English it's like Bohemian Rhapsody. It's Bohemian like Rhapsody. That's also very nice. diverse. Yeah, diversity. Absolutely. Okay, हाँ. So how then मतलब from आज जाने की जिद ना करो to Rap. हाँ, how Yeah, does so that? I never thought I could write. क्योंकि बचपन में जो गाने होते थे वो होते थे shut up, just shut up, you cannot talk shit about me. I'm the best. ऐसा करके डायरीज भरी होती थी. Okay. No, but that does But then that's important for your for me to understand the mental landscape that you were going through. Clearly, a lot of bullying. a lot. Yeah, Oh, and- my diaries were dark. Yeah. Dark. They were like drawings of a sad girl. So then in 2016, when I was in NCA, Okay. I went through the lowest point of my life where a lot was going on. A lot was happening. Allah So raham kare. I got bald. Why'd you get bald? I don't know. I just felt like it. Oh, you shaved your head. I shaved my Oh, head. अच्छा अल्लाह खैर करे हाँ. No, I shaved my head. हाँ, क्योंकि you myself. get bald. I was just like exploring myself so much at that time because I was just like I was like I need to be away from the normal girls. Okay. So I shaved my head and I felt this confidence and I was like, yes. I can do this. Yeah. Yes. And then I started writing paragraphs and paragraphs in my diary. My entire life is written in a diary. Okay. Like I've been writing diaries since I was a kid. So I started writing paragraphs, contextual. Then Risham, एक मिनट आपने बोला away from normal girls. We just tell me what normal is. थोड़ा सा and then we can go on. like हाँ. you know how you expect normally आपके दिमाग में लड़की का क्या आइडिया होता है? Okay. बाल होंगे. हाँ. कपड़े होंगे. चलो तरीके के, अगर हाँ. बाल छोटे भी हैं तो बाल तो होंगे. हाँ. Makeup होगा. Makeup That sort होगा. of thing. Okay. मेकअप नहीं भी होगा तो थोड़ा सा उसमें कुछ होगा. हाँ. Like so I was Femininity. like कि I was like कि मैं गंजी कर लूँगी अपने आप को. मुझे चाहिए ही नहीं. So you wanted to move away from the femininity for a For bit. a while. Yeah. Okay. For a while Okay. to explore Okay. what is the height that I can go to with this gender that I have. Okay. Interesting. Very good. Okay. Yeah. Okay. So I started writing paragraphs in English and I never thought कि मुझे कभी ज़िंदगी में पंजाबी आएगी भी या उर्दू में मैं लिख भी सकती हूँ, ऐसा कोई सीन हो भी सकता है. So एक दिन मैंने रात के 3 बजे बैठे बैठे उर्दू में शायरी कर दी. खुद ही एकदम बस से आ आवाज़ गया. आई. नाजिल हुई. अल्लाह और रहम मैंने करे. ना बहुत डर के ने एक दोस्त को सुनाई. उसने कहा यार बहुत आला. हाँ. फिर मैंने ऐसे अपनी बहन को सुनाई, फिर मैंने मामा को सुनाई. हाँ, फिर because मैंने- these are all हाँ, people who are trained, हाँ. फिर मैंने जब अवाम को सुनाना शुरू की तो आई वाज लाइक ओह आई एम गुड. Yeah. सो यू नो हाउ द वोकैबुलरी इज इन योर हेड. Yeah. अगर आप पंजाबी हो, उर्दू हो, जो भी हो, आपके दिमाग में वोकैबुलरी होती है. एंड माई पेरेंट्स यूज टू रीड लिटरेचर ऑल द टाइम. पंजाबी, उर्दू, सारा. Wonderful. That's good. Yeah. That's very good. सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग इन उर्दू. देन आई स्टार्टेड राइटिंग इन पंजाबी. Okay. एंड देन फिर मैंने गाने बनाना शुरू कर दिया. एंड देन कमारे माई I've heard, सॉन्ग yeah. was my debut. Dude, that's a very good song for a debut. That was like the debut song that I wrote and Yeah. composed. Okay. Also, so a couple of things about that song that struck me. I was listening to it this morning only. Huh. A couple of things. One, so you're not shying away from your sexuality or your femininity. I'm not. Dhumke bhi hain, all that stuff. Bilkul, I'm proud to be Because you female. Yeah, but proud also, robust though. Yeah. You can be proud and be timid. I'm proud, but ghar ke andar. हाँ, नहीं, हाँ. You know, I'm not shy about it. No, you're not shy about it. And I was like, that's और कुछ नहीं. People can have their own opinions, but that's refreshing, Yeah. right? Because even in rap, you're like, हाँ ठीक है, gangster बातें कर लो. हाँ. बदतमीज हो हाँ, जाओ. बदतमीज हो जाओ या थोड़े aggressive हो जाओ. But Yeah. there's no room, I think, for women in our muashara, for women to be understood as Just who they are. to be in charge of their own sexuality. Yeah. Sexual objects तो होते हैं. Beautifully said, yes. हाँ, you can उनको आप उनकी शादी करवा दो, उनसे शादी कर लो, किसी तरीके से उनको colonize कर लो या कुछ. But we don't have the room
to respect a woman who's like, "Yeah, I'm also sexual," then you will not be respected. Then you're a bad woman. You're the buri pairi kuri. Pairi kuri. Exactly that. You're the Wow. pairi kuri, basically. Yeah, interesting. So that struck me. I was like, so good lyrics, Yeah. good music, and also well produced. मुझे नहीं पता किसने. Somewhat super. Yeah, Yeah. somewhat super. Yeah, somewhat super. What's Those guys, up? huh? Somewhat super. Somewhat super. Are you super? I guess somewhat. तो जो है वो, what's it called? But then that really struck. The performance really struck me. How much do you work on that? So writing की हमने बात की, lyrics की हमने बात यार की. कवाड़े में तो ऑनेस्टली बड़ा ही स्पॉन्टेनियस सीन हुआ था. Okay. स्क्रिप्ट बिल्कुल ही कुछ और था. Good. That's always good. और गाना जो मतलब जब फिरोज और मैं मिले तो हम स्टूडियो सेशन में बैठे तो गाना भी हमारा बिल्कुल कुछ और होना था. Okay. लिरिक्स भी. और 8 घंटे का स्ट्रेट सेशन लगा था जिसमें पूरा गाना कंप्लीट हो गया था. 8 क्या? 8 घंटे का स्ट्रेट घंटे. सॉरी. I'm sorry. I do this to everyone who's from Lahore. पंजाबी प्रॉब्लम. It's okay. I just wanted to make that joke. I don't know why. चलो जी. तो 8 घंटे. हाँ. 8 घंटे. बूथा घंटे. 8 घंटे का. 8 घंटे का स्ट्रेट सेशन था जिसमें भी completed the entire song. Wow. There was no other vocal take. There was nothing more done to it. Wow. उसी में लिखा, उसी में कंपोज किया, उसी में गाया, उसी में मेलोडी बनाई. On average, how much does a session like that take otherwise? अगर ये वाला नहीं होता तो लाइक आपको एक दिन लगता है लिखने में गाना, फिर आप उसकी मेलोडी बनाने में, फिर आप वोकल टेक देते हो, फिर म्यूजिक बनता है, फिर आप फाइनल वोकल टेक देते हो. So ये दिनों का काम होता है. हाँ. Oh wow. Okay. तो 8 घंटे में. हाँ. और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कुछ और होना था, लेकिन मैं इतनी ज़िंदगी में तंग थी और आवाज़ार थी इस कॉन्सेप्ट से कि भाई तुम हो गई हो अब 25 साल की. तब मैं आई थिंक 25 की थी या 24 की थी 2019 में. माशाल्लाह. तो नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ. आई एम 27 ना. हाँ. अच्छा. 24 की थी. 24 साल की थी. हाँ. ठीक है. तो अब तो ग्रेजुएट होगी तो शादी हो जानी चाहिए तुम्हारी. मैं किस चीज़ में, मैंने शादी में ग्रेजुएशन की है. मैंने ग्रेजुएशन किस चीज़ में क्या कर रही हो? जिंदगी ज़ाया कर रही हो, वक्त ज़ाया कर रही हो. और शादी प्राइम एज है बच्चे करने की. Oh right. Okay. Yeah. Do you want to have kids? I'd love to. हाँ. I'd love to. On your own time. Inshallah. On my own time. I would love to have kids. Yeah. But ये जौन सा है प्रेशर. हाँ. तो कुंवारे होने का जो प्रेशर था ना, कि मतलब अगर आप मतलब लोगों के बड़े मसले होते हैं. But it's interesting that people assume कि someone like you, someone who wants to have a career, wants to do all this stuff, does and not I'm want to have talking kids. other than my parents. हाँ. No. Of course. Like मेरे अपने माँ बाप नहीं मुझे कह रहे. हाँ. और बाकी दुनिया जौन सा है ये प्रेशर डाल. जी. ज़्यादातर वालिदैन नहीं बोलते हैं. ज़्यादातर जो थी बाकी जो मुआशरा होता है ना, जो अपने बच्चों को कुछ नहीं कर रहे होते, उनके घर पे कोई रोटी नहीं पूछ रहा होता दूसरी उनसे. I mean my father raised me as a girl जिनको उनने हमेशा बोला है कि हो जानी है शादी, कभी ना कभी हो जानी है, लेकिन तुमने ना इसका प्रेशर नहीं लेना. नहीं. Your first priority should be what you want to do and what you want to make out of yourself in your career, in your life. Yeah. And then find someone who will be okay with that, na? मतलब, and it's difficult. Listen, it's difficult to do that. Lekin, it's difficult to find that person. Yeah, but that's life, man. You know, what else are you going to do? ऐसे थोड़ी होता है. You can't. पता नहीं यार. तो मतलब लोगों के बड़े बहुत से मसले होते हैं जी. पैसे नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, गुर्बत है, अमीर हैं, पैसे समझ नहीं आ रही खर्च कहाँ करने हैं, बच्चा भाग गया, बच्ची किसी लड़के, मतलब बड़े बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बहुत दुनिया में बहुत मसले हैं. लेकिन जो कमाने होने के मसले हैं ना, वो असल मसले हैं सर. रियल प्रॉब्लम ये होते हैं. रियल प्रॉब्लम. तो मैंने कहा फिर इन पे गाना बना देते हैं. वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकल आई बाहर. Yeah, I think that's beautiful, and I think that's powerful that's how that happened, because the song turned out great. Yes, and then one day Feroz gave me a surprise कि गाना complete हो गया. He's just like यार कॉफी पे लेके चलता हूँ. मैंने कहा ठीक है, गाड़ी में गाना लगा दिया. And then how did the video come about? हाँ, and then we sat together, 3-4 of us. One was the director, one was the producer, and we were sitting and we made like a very artsy video. कि ऐसे फ्रिज पड़ा होगा, उसके अंदर ये लगा होगा, एक लैंड होगा, बैरन ये होगा, दरवाजा होगा, मतलब very art oriented video. लेकिन जब शूट स्टार्ट हुआ तो मैं फाट गई. Fair enough. I was like, oh wait, मैंने कहा यार ये स्क्रिप्ट भूल जाओ. मेरे दिमाग में ना मुझे एनर्जी चाहिए. मुझे निकलना है बाहर इस गाने पे. मुझे एक्सप्रेस करना है. सो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट लाइक परफॉर्मिंग बीइंग माई सेल्फ. आई टोल्ड द डायरेक्टर, लिसन, विल यू गिव मी द फ्रीडम टू बी माई सेल्फ राइट नाउ. ही सेड गो फॉर इट. ओके. सो जितने भी सेट्स, जितने भी हमारी लोकेशंस लगे हुए थे, आई जस्ट डिड व्हाट आई वांटेड. That's why I'm jumping around, I'm dancing, and then the thumkas and
all of that, I was just like, मुझे छोड़ दो आजाद इस गाने Yeah, में. So, but then that's what I also noticed. कि it's not necessarily you trying to be vulgar. It's just you feeling yourself. I'm you know? just like myself. This That's is it. actually normally the kind of person that I am That's it. otherwise as well. That's it. I think there's immense power in sometimes letting artists be their crazy selves. Because देखो ये expect करना ना कि हाँ artist तो आप हैं ना. लेकिन एक मुनासिब किस्म की normal किस्म की artist इस बन जाए timeline आप. पे चल जाए हाँ, फिर. इस artist normal किस्म की बन जाए. I said yeah, it's very difficult Yeah. for that to happen because artists are any singers, anything, painters are cautionary tales. Right? You can't expect them to be like ऐसा भी होता है जैसे Manu है for instance, right? Manu once told me कि he एक summer में उसने कोई 8 गाने लिख दिए थे, right? But Dude, I totally believe that. of course, but the thing is you can't expect him to do that every summer either. Exactly. It's chaos, na? It's So when chaos I in your head. released Kamare, I wrote 15 songs in 10 days. Wow. All right. And how many of those did you make? I'm making them one by one. now. Okay. Okay. Matlab, Sorry. I've released 4 of them. Okay. Alhamdulillah. Kuware ke, acha, and then would you say that was a successful debut? Kuware was? It really was for me. Okay, Yes. okay. Because I was not expecting. पहले तो मतलब गाना रिलीज करके मैं भूल गई उसके बारे में. और वो डायरेक्टर ने भी मेरी वो परफॉर्मेंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट उससे इसीलिए एग्री किया बिकॉज ही सॉ कि ये बहुत डिफरेंट वाइब है. हाँ. ये हो करने जाएगा. हाँ. ये करने हाँ. सो मैं भूल गई गाने को 1 साल के लिए. हाँ. और वो लोगों के कमेंट्स इतने क्योंकि ऑब्वियसली वो बिगिनिंग थी तो एक एक कमेंट आपको फील होता था. Yeah. अब लोग कह रहे हैं कि ओ ये क्या कर रही है, पागल हो गई है, ये लेफ्ट राइट भाग रही है, छलांगे मार रही है, इसने ये वाले नशे चाहिए भाई. हाँ. यही वाले. ये वाले Whatever she's having. One of ये those. वाला नीचे. एंड देन अ मीम कम्स आउट, भाई वो कस्टमर कहता है भाई डुआ लिपा देना सस्ते में और नीचे. That's good, dude. That was actually really good. And I think your reaction to that is very refreshing to me because again हम जो होते हैं वो बहुत फिट था. हाँ पर हम जो होते हैं हम इसको दिल पे लेते हैं. हम बोलते हैं हाँ, कि नहीं. मैं नहीं हूँ, मैं ऋषम हूँ, मैं dude मैं हंसी. it's all fun, man. Exactly. You know, it's all fun. Yeah. So then when Kamare got into Churels, that's when it got the hype, Yeah. the boom. And then after that, I was like, oh, okay. Yeah. This shit is working. Yeah. Yes, this is going good. Yeah. Then I started just, since then it was just non-stop. Then Yeah. I did the Hamstyle Awards ki opening performance. Then I performed at BCW. Then I made other songs. I made a song with Hassan Rahim. Yeah. I made... That was serious too. Yeah. That was pretty crazy. Hassan Rahim wala. it was. Yeah. And bas phir uske baad se it kept going on. So I think for a debut, Yeah. what else could you ask for? Exactly. Sure. How was it? Now, again, considering the kind of person you are, how was it that your song got into chorales and all those things? Because I know you're not political. You're apolitical, theek hai. But women empowerment, unfortunately, has also become a political thing. It has. Right? So in that vein, Churales itself is a very powerful. It's a देखो, good or bad. It's a powerful show. It's a powerful show. Good or bad, I'm not saying anything. It's a right? statement in the industry. It's a statement, right? And it's so refreshing. मैं इतनी बार refreshing बोल चुका हूँ. It's so pleasing कि it's so different. Yeah. You know, it's so jarring. You know, the Like, story you know, and everything. I feel like you believe in manifestation, right? Sure. And you do believe in the law of attraction as well. Sure. right? Yeah. So मुझे ऐसा लगता है कि like कहीं भी आप हो ना, पाकिस्तान में, यूएस में, कनाडा में, दुनिया में भी कहीं भी, like if a few women are or people, men, women are working with the similar kind of energies, na, Yeah. they always clash together. They attract. तो synergy बन Yeah. जाती है. So, Yeah. like they, so I was this singer who was, you know, like dancing on Kumare and making something that was away and different from other women Mainstream. or mainstream. Yeah. And then these people, Churales, Yeah. wale, everyone, the entire team, they were also working on the same thing. So Yeah. then we clashed. Sort of. And you know, what's interesting is this. What's interesting is people don't appreciate how long it takes. Exactly. अब जैसे ये गाना है, आपने चलो 8 घंटे में हो गया. But the obviously the process behind Exactly, right? And Asim Abbasi and co, when they were making Churales, सालों मतलब it's years in the making, Exactly. right? And then well, you know, synchronicity where it just aligns at the right time. aligns at the right time. It's fantastic, man. I think what else could you ask Yes. for? Having said all of that, now we come to ये वाला जो गाना है सबसे ये जो latest वाला Pairi है. How was it making this? आपने चलो उसकी आपने
inspiration to bata di. ठीक है. How was it making it? Like the video and everything. Because the video is very interesting. Oh, dude. Also, the other person who sings. जी यार, My मैं जो है God, ना, she's spectacular. Yeah, मैं आजकल वैसे मैं बहुत कमजोर हो गया, मैं काफी She's spectacular. आराम से रो जाता हूँ, लेकिन मैं हाँ I was like, थोड़ा आ जाता है यहाँ ऐसा साइड से I ना was like, थोड़ा सा. क्या है यार, वो जो तकिए भी नहीं ऐसा लगता. मर्दानगी थोड़ी कम हो जाती है यार, ये क्या हो गया. फिर then I flex my muscles and I'm fine. नहीं काजी रो रहे नहीं. Just it's fine. It's fine. But yeah, it's just so powerful again. Yes. So how did all of that happen? So the entire team Mm-hmm. in the song is all ladkiyan hain. Okay. From Awesome. the executive producer to the director to the music producer to the performers to the co-singer, Yeah. every person on this team is a female. Fantastic. It was an Mashallah. all-women project. ठीक है. This wire is very annoying. I'm sorry. I'm It so was an sorry. all-women project. Yeah. Different kinds of women from different fields came together Sure. to make this happen. Yeah. So I did my part where I was like writing and singing. Then the producer did her part for making the song so bold and spectacular. Yeah. Then of course Drama Queen Productions, who worked on the video. Yeah. All those women were just like, they were an inspiration themselves for me. Yeah. Because usually at shoots you at one point feel the need to tell them कि नहीं ऐसे कर लें. हाँ. या मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए. Okay. On this particular shoot I was just like, It's fine. हाँ, आ गया शूट. हाँ. और शॉट आ गया, अच्छा चलो परफॉर्म कर दिया. Because I knew Yeah. they know their shit. Okay. So They were there was this, sorted. But there was the spirit. No, there was the spirit कि यार this is. They were all working for this one cause. Yeah, the cause, exactly. Okay. You don't want to say it, it sounds cliched, but you were working for a cause. Yes. It was a cause. It was a cause. And then every concept that they came up with, like the shots and the styling and the clothes and the concept and the dance and the jitni bhi cheezein, like me, how am I supposed to walk, what am I supposed to wear, what kind of hair, everything was flowing in that same channel. Yeah. And that's why the video became so good, because किसी एक भी इंसान की इंटेंशन या इंटेंसिटी कम नहीं थी. Energies match कर रही थी. They were all yeah. just working दिल से बहुत ज़्यादा, and I it was a beautiful experience. It was a beautiful experience watching it. I think what's also important to note here is कि ये आप नहीं कर सकते हो कि अब you don't dress the part, you just sing. You know, वो ज़माना चला गया. Now Exactly. the whole package needs to be the whole package. You And can. एक बंदा भी टीम में वीक पड़ जाए ना, तो हाँ. वो कहीं ना कहीं से हाँ. the video or something becomes. Yeah. सही है. I understand that. We can't not talk about it. Aurat March. Taasurat. I performed On the which one? in Lahore at this one. Oh wow! I How was actually that? performed yesterday and came to Karachi then. That's fantastic. Thank That's you. Thank but yeah. So I had a few people get into arguments with some other people Yeah. from the Aurat March, and more often than anything else, now this is the view I take of it. Correct me if I am being irreverent of it somehow. लेकिन मुझे ये लगता है कि Aurat March is two things for me. Aurat March is a celebration, ठीक है, of womanhood in every color that is. बिल्कुल. And B, Aurat March is outrage. It's a ठीक है. space for outrage, right? है. You can't. अगर किसी को चोट लगती है ना, अगर मुझे चोट लग गई, if I stub my foot on this Yeah. table here, हाँ, that won't be good. But the thing is, you can't tell me, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि आप बोलोगे कि काजी ऐसे नहीं, इस तरीके से चीख मारो. हाँ. That's what outrage is ना. Outrage is कि किसी दर्द हो रही हो, बोलना नहीं, ऐसे आवाज नहीं बोलना, निकाली, ऐसे आवाज नहीं बोलना, निकाली. हाँ, ऐसे नहीं. Within reason, dude. देखो, and so my thing is कि I as a rule don't go. I'm like, because then I'll have opinions ना. ये बोलने की क्या जरूरत थी? Bro, आप घर पे रहो ना. आप chill करो ना, Netflix देखो, खाना वाना खाओ, कुछ रोटी खाओ, कुछ करो यार. You know, just because. So right, you've explained it in a very like smooth way. Allah रहम करेगा. But what I'm saying is this. What I'm saying is कि, you know, it is a space for outrage, right? Because here's what people will say. People आगे से ये बहस ये करते हैं कि इस खास 8 मार्च को एक दिन मार्च करके क्या मिल जाना है? तो यार मेरी बात सुनो ना, आप मतलब I don't want to make that comparison, but आप पार्टीज पे भी तो जाते हो ना, सेलिब्रेशंस भी तो होती है यार ना. एक रात मुझे बस मजा आ जाए, पार्टी कर लूं, अगला पूरा हफ्ता अच्छा गुजर जाए. हाँ, पूरा हफ्ता काम करूंगा या whatever else, you know. So to me, is that fair? I think outrage and celebration. अच्छा, to me औरत मार्च का concept is a bit different. Okay, tell me. So you do believe in perspectives, Sure, and of course.
टॉकिंग अबाउट दैट, हम सब औरतों को अगर ले लें तो हर औरत का एक अलग मसला है अपनी अपनी ज़िंदगी में, और सबके लिए अपना मसला सबसे बड़ा होता है. एब्सोल्युटली. एक ने मैनिक्योर कराया, उसका मैनिक्योर ख़राब हो गया, और एक के मियाँ ने उसको मार मार के उसका मुंह तोड़ दिया. सही. तो दोनों के लिए ना उनका अपना मसला बहुत बड़ा है. वो कहेगी जी मैंने इतने पैसे खर्चे, मेरा मैनिक्योर खराब. वो कहेगी मेरा अब ये वो फला कोई मेरे से सपोर्ट. सो सबके लिए अपना मसला सबसे बड़ा होता है. औरत मार्च इज दिस वन प्लेस वेयर एवरी वुमन कम्स with their own biggest problems of their own and their opinions, and they console each other. It's valid. All of it is valid. They talk about it. They voice it. They tell the world this happened to me. The other one says this happened to me. The other one says this happened to me. So when I say they're all there for a cause, that cause is not one. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं औरत मार्च पे थी और मेरे से एक इंटरव्यू ले रहे थे एक टीवी चैनल वाले. वो कह रहे थे जी ये औरत मार्च की थीम क्या है. मैंने कहा किटी पार्टी थीम है. किटी पार्टी थी, चाय पियेंगे हम. हाँ रेट्रो थीम है जी, सब सारे 80s का तैयार होके आए हुए हैं. मतलब क्या थीम. यार इनको साउंड बाइट्स चाहिए होते हैं इनको. अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा थीम कोई नहीं है जी, एवरीवन इज हियर फॉर अ कॉज, और सबकी अपनी अपनी कॉज है. सो फॉर मी इट्स दैट कि सारे लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं जी आप सबकी जितनी भी रीजंस हैं ना वो आप सबकी अपनी जगह सबसे बड़ी हैं और हम आपके साथ हैं, आप ठीक कह रही हैं, आप सही हैं. That is enough for you to know. जब आपको पता कि ना आपको और तरीके से राइट्स नहीं मिलने हैं, आपको और तरीके से किसी ने सुनना नहीं है, आपको एक इतनी ज़्यादा आवाम खड़े होकर कह रही है कि तुम ठीक हो, तुम सही कह रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं. That is more than enough. That's powerful. But I will, okay, so that's beautiful. And then there's obviously that outrage, and then there's obviously all of that added on it. So I also agree with you. Fantastic. But okay, so I will present one counter argument here. कि देखो, औरत march is also about discourse, right? डिस्कोर्स अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे माशाल्लाह इतने बड़े दिमाग है ना कि हमारा जो डिस्कोर्स की कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है. यू आस्क मी व्हाई आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट फॉर दिस रीज़न कि हमारा जस्ट द कैपेसिटी टू होल्ड डिफरिंग ओपिनियंस. तो आपने ये बात बोली, मैंने ये बात मान ली एज वन पर्सन टू अनदर कि यार सबके मसले उनके मसले होते हैं. बट सोसाइटल डिस्कोर्स क्योंकि लिमिटेड जगह है तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि मैनिक्योर वाली आपा का जो मसला होता है वो समटाइम्स थोड़ा छोटा होता है उस मसले से, उस किसी की जो कि किसी की जान जाए, किसी की जान का. बिल्कुल. सो हाउ डू वी, and I know कोई जवाब हमें I mean that was an example, of course. Listen, but that's exactly why I urge people to watch the whole fucking podcast. लोग जो होते हैं ना क्लिप निकालते हैं, ये गलत बोला, ये क्या गलत बोल दिया, नाखून कहाँ मारना कहाँ, मतलब it was just like to explain the diversity of problem. Of course, right? But how do we create room in the muashra for the whole thing? क्योंकि लोग आगे से ये बोलेंगे ना कि यार यहाँ नाखून वहाँ तो किसको अटेंशन दे. टेक्निकली द जवाब है आप दोनों को अटेंशन दें, आप कम नहीं हो जाएंगे. सो औरत मार्च में बेसिकली ऑब्वियसली कोई नाखूनों की बात तो नहीं करने आएगा. एंड ऑल्सो लाइक द छोटे मोटे मसले दैट यू कैन ऑल्सो डील विद योर सेल्फ बीइंग एन एडल्ट पर्सन. बट लाइक मेजर प्रॉब्लम्स जो कि इतने मेजर हैं. अब मसला पता है क्या है, सोसाइटी में ना हम लोग इतने इम्यून हो चुके हैं ये बातें रिपीटेडली सुन के कि डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिज प्रॉब्लम्स, इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स, हम इतने इम्यून हो चुके हैं कि अब हमें ये मसले ना सुन के उस तरह से सरप्राइज नहीं करते. जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी खिड़की के बाहर बम फट गया जी, यूल बी लाइक ओ बम फट गया, आग लग गई, पानी फेंको. अब मैं आपको कहूँ यार तुम्हें पता है कि वो काजी यार वो लड़की थी एक काम वाली, उसका मियाँ उसको मारता है. So कितनी बार आपने सुना, will you be like वाकई? I think that's disingenuous. If I did that ना, क्या? What the fuck? Where are you living, dude? Of course ये होता है. So you're so used to listening to this happening so many times. अब आप इसमें ये नहीं सोचते कि कितनी बार कितनी ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, कौन रोक रहा है? हाँ, रोक तो कोई नहीं रहा. क्या कर रहे हैं हम इस बारे में? आप जाके बातें कर लेते हैं, आप सपोर्ट कर लेते हैं, चलें सपोर्ट कर लेते हैं. लेकिन इतनी मतलब रोज़ एक कहानी आपको सुनो, आप इम्यून हो चुके हुए हैं. आप इतने इम्यून हो चुके हैं कि अब आप थोड़े ठंडे भी हो गए कि यार अब क्या ही हो सकता है, क्या ही करें. मतलब ऐसे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कहते हैं जो शुरू में सपोर्टर्स होते हैं, ओ विल मेक श्योर कि उसके साथ ये ना हो वो ना हो, और बाद में देर लाइक कि यार अब यही माशरा है, ऐसे ही होता है, हम अपने बच्चों को बेटियों को बचा लेते हैं बस, बाकी सबसे किसी और के बारे में हम क्या करें. गाड़ी पे आप जा रहे होते हैं, एक लड़की ऐसे गाड़ी से गिरती है नीचे, कोई फेंक के चला जाता है, फिर आप कहते हो कि यार पता नहीं कैसे लोग हैं, मैं रुकूँ कि ना रुकूँ, मेरी बेटियाँ मेरे साथ हैं.
to that end, right? We've become so numb. Do you feel that pressure as at least an artist कि आपकी lyrics को और खतरनाक होना ज़रूरी है फिर? क्योंकि हम सो रहे हैं, technically is what you're saying, right? Because I do agree with you कि we've become numb. But then it's on the people creating the art to wake us up. क्योंकि पुलिस वाले तो नहीं कर रहे और लॉयर्स तो नहीं कर रहे और गवर्नमेंट तो माशाल्लाह से आप देख ही रहे और आप वेलकम टू सिंध आपने अभी देखा क्या लेकिन so then it's on the artists na to bring us together. So do you feel that pressure? I don't. You don't feel that pressure? Okay. I usually try to keep my lyrics very generalized so that every kind of person going through any kind of problem can relate to it. Okay. अगर मैं उसमें बहुत ज़्यादा specify कर दूँगी मसले problems तो वो फिर एक बहुत specific category के लिए relatable होगा. So I want the music to be relatable to every sort of person. Fair. अब अगर कुरी दादी है उसकी शादी है तो ये लड़के पे भी जा सकता है. हाँ sure, of course, yeah. अगर वो घर से निकलने में उसको मसला होता है तो वो एक लड़के पे भी है. If a guy is not the typical mard that you expect तो उसके लिए भी बड़े मसले हैं society में. So I want to keep it generalized. Okay. You want to speak to everyone. I want to talk to everyone. I want to talk to every gender who has gone through such problems. Yeah. So मैं as an artist खुद categorize नहीं करना चाहती. Okay. Like I want every person to relate to it. I think that's powerful. I think because the thing is because वो I'm sorry I'm cutting you. No, please. वही है ना कि like women rights is not about being better than men or not about suppressing them or not about being woman dominant and non-male dominant. It's just about equal rights. भाई आपको शादी के बाद जायदाद में हिस्सा मिलता है हमें भी चाहिए. क्यों ना मिले हमें? क्यों ना मिले? मतलब it's just about equality here. It's not कि भाई हमने आपसे आगे भाग जाना है रेस में हमने जीत जाना है हमने आपको नीचे दबा देना नहीं हम coexist करना चाहते हैं हम parallel चलना चाहते हैं. Yeah. I don't know why that's such a complicated concept. कि मतलब बस I don't understand. I पता है क्या बड़ा आसान है यार इतना मुश्किल नहीं है. देखिए हम आपने between the two of us हमने मसला तो हल कर दिया है. मसला मेरे ख्याल में हल हो गया लेकिन I think एक मिनट आपको जाना भी था एक मिनट. We have 12 minutes. Let's go on for another 5 minutes and then we'll wrap it. ठीक है क्योंकि माशाल्लाह से आप जो है you're on it. When are you leaving? I am leaving tomorrow night. हाँ that's a short trip. It's a short trip. लेकिन कराची मेरे ख्याल में आपका दिल भर दिया होगा कराची ने बस ये. I like Karachi. Yeah, I love the city. Okay, where do you like performing the most? In Karachi? No, anywhere. Pakistan में. Have you performed? Like where would I dream of performing? Like the dream place? हाँ, sure. Okay, I haven't thought about that. Okay, think about it right now. Think about it right now. Okay. I'm not going to talk to you until you give me an answer. Okay, wait, let me think. I'm kidding. So I think at the stadium. Which stadium? कौन सा वाला ये? No, Lahore Gaddafi Stadium, cricket stadium. Ooh. I would love to perform there. Yeah, that'd be cool. That would be cool. So this is another pop culture. ये मैं पता नहीं पहले क्यों नहीं पूछा लेकिन खैर पूछना मुनासिब है. So you've already made a song with Hassan. Who else would you like to make a song with? या अभी ऐसे कोई हैं जो already बन चुके हैं? बन रहे हैं. बताओ ना. बन रहे हैं. I'm working on a song with Rap Demon. Okay. And dude, that dude's super serious, man. I love him. I love him so amazing. much. Yeah. Yes, he's very talented. Very good. And a few other artists as well. जिनका नाम ही नहीं ले सकते. That I want to keep a surprise. That you want to keep a surprise. Dude, very exciting. But yeah. Yeah. I think. But I would love to make a song with Misha Shafi. Sure. Yeah. Misha Shafi आजकल हाँ. I think we can make something really good together. I think so. Sure. I would love to collaborate with young Shanners. Although Tala is a friend, but like which Tala? Tala Yunus. Okay. But like I would love to make a track with them. Dude, who wouldn't? With the young Shanners, I think मतलब हाँ. And internationally, I think I would love to work with Jasmine Sandless. मैं नहीं जानता ये कौन है. मेरे नैने ने शराब दिया दो बोतल. Sorry. Oh, you definitely know that song. Wait. Oh, Illegal Weapon. Illegal Weapon. Sure. Yeah, Illegal Weapon. I know. I actually danced to it. Believe it or not. And AP Dillon. Of course, AP Dillon, dude. AP Dillon. Yeah, he's a vibe. He's a mood. He really is a vibe. He really is. And the thing is, हम नहीं समझते ये. That's a large
पंजाबी कम्युनिटी, Oh yes. जिससे वो बात कर रहे हैं ना, Yes sir. वो मतलब एक पूरा मुल्क बना सकते हैं अपना, इतने सारे होते हैं वो लोग. उनकी पूरी एक डायनेस्टी है बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका में, and they're proud, and all the interactions that I've had with these Yeah. people, super proud of their culture, anchored in their language, and yet absolutely North American as well, and it's very very exciting, it's very interesting, and it's huge. it's huge and vibrant. Well, one thing I love about him is कि उसका जो the lyrics are very like they're well thought. Okay, fair Content enough. है. It's Yeah. not just about गोलियां ठा ठा बजी ठुमका थे गया उथे गया. No. And देखो, Content है. and the other requirement which I think हम कभी कभी भूल जाते हैं is it also needs to be good content. Exactly. Yeah. चलो कंटेंट तो बात करने पे तो मैं मतलब ये पानी की बोतल पे भी कर सकती हूँ एक कर घंटा. सकते हैं, लेकिन needs to be good content. Yes. Risham, you really have to get out of here. Thank you for doing this. Thank you for having me. Of course. अगली बार आप जो है It जब was a good serious talk session. Serious Next था ये? time we're going to have some fun. we started with the Bhutta. I mean, I don't know how serious it is. Actually, it wasn't that serious. It's not yeah. serious, man. It's always this way. with Bhutta me. is funny. Yeah. Bhutta is funny. Bhutta is funny. And Ghenta. anyway, मुझे खुद को हंसी आ गई. Wait, घंटा. right? घंटा. So you didn't notice my रे और इतना नहीं होता यार. रे अड़े. मेरी अपनी उर्दू भी बहुत खराब है. Yes. मैं सिंधी हूँ ना. I feel normal. I mean, you are normal. I don't think you want to be normal. Who wants to be normal? Who wants to be normal? I don't want to be normal. Did you just call me normal? You called yourself normal. आप जो है ना introspection करें जाके. Next time you're in Karachi, let's do a longer podcast inshallah. अपना please Instagram. Yes, my Instagram is Risham Faiz Bhutta. My YouTube is RFP. RFP. And Spotify is also RFP. Spotify and all is the other RFP. apps is also RFP. RFB. I'll give you links. Keep doing you. Thank you. Risham. Keep doing you as well. Thank you. Risham, Kazi. Assalamu alaikum. Signing off.